आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पिछले साल अक्टूबर में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का जो सबसे हाईएस्ट फोरम है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसे जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी कहते हैं, उसका इजलास हुआ। लेकिन उस इजलास के जो मिनट्स हैं उन पर दोनों ममालिक का इत्तेफाक जो है या जो उस पर दस्तखत हैं इस साल जुलाई में हुए, जब चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पर आए। एक तो सबसे अहम सवाल ये कि तकरीबन मीटिंग 9 माह पहले हुई और 9 माह के बाद जो मिनट्स हैं जेसीसी के उस पर दस्तखत हुए। अब जो तफसीलात हैं उसकी हमारे पास मौजूद हैं कि क्या कुछ उस जो लास्ट ईयर अक्टूबर में मीटिंग हुई थी और जो सेकंड फेज की बात हो रही है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को शुरू करने के हवाले से, क्या वाकई सेकंड फेज शुरू हो रहा है और क्या चीन के कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान के अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इस पर बात करेंगे। लेकिन शहबाज, सबसे पहले मैं यही सवाल करना चाहूँगा कि मीटिंग पिछले साल अक्टूबर में हुई और ये वर्चुअल मीटिंग थी और उसके बाद फिर इस साल जुलाई में हमने देखा कि जाकर के जो उसके मिनट्स थे मीटिंग के उस पर दोनों ने अग्री किया और दस्तखत हुए। ये अनयूजुअल है क्योंकि ये 11वीं जेसीसी की मीटिंग थी, या डू यू थिंक कि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जब भी इस तरह की हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है तो यूजुअली इट टेक्स टाइम जब दोनों मुल्क जो हैं वो मिनट्स के ऊपर दस्तखत करते हैं? कामरान, अनलाइक अदर कंट्रीज, अदर फोरम्स, जो चाइना का तरीक़ेकार है काम करने का, अगर कोई अहम इजलास होना है तो उसके जो मिनट्स हैं वो पहले ही ड्राफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है उनकी प्रिपेयर्डनेस इतनी ज़्यादा होती है और इतनी उन्होंने प्री मीटिंग्स की होती हैं, इन प्रिंसिपल चीज़ें तय हुई होती हैं और एक फॉर्मल फोरम के ऊपर उसको ले जाके एक प्रिंसिपल उसका फॉर्मल अप्रूवल लेना होता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के प्लेटफॉर्म से जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी, जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी है सीपेक की, उसके मिनट्स में इतनी ताख़ीर हुई हो। यहाँ तो तकरीबन 10 माह लग गए ना, मेरा नहीं ख्याल कि कभी 10 दिन भी लगे हों। उससे पहले जो उसके 10 इजलास हुए थे कि 10 दिन भी लगे हों उसके मिनट्स को साइन करने के लिए, क्योंकि मिनट्स पहले ड्राफ्ट हुए होते हैं और जो जब इजलास खत्म होता है जेसीसी का तो उसके फौरी बाद वहीं पे साइन हो जाते हैं, वो अगले दिन तक भी नहीं जाते। तो इस दफ़ा उनको 10 माह लगे। थोड़ा सा अगर इसका हम फर्दर पीछे चले जाएं कि क्या ये इजलास होना चाहिए था या नहीं, 11वां इजलास जो जेसीसी का, जो मेरी इत्तला है, जो हमने उस वक्त रिपोर्ट भी शायद किया था कि चीन जो था 11वें इजलास के हक में नहीं था। उसकी वजह ये थी कि 2 फैक्टर्स थे बड़े। एक तो वहाँ पे कोविड की एक सूरत हाल थी, चाइना की बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रही है रिगार्डिंग कोविड और वो बड़े सेंसिटिव थे, उन्होंने अपनी कंट्री को भी बहुत अरसा बंद रखा। दूसरा, जो प्रोग्रेस थी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर, उसके ऊपर ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, ना पीछे ना को आगे होने बड़ा काम होने की तवक्को थी। तो एक पॉलिटिकल इवेंट के लिए वो एक सीपेक या जेसीसी का इजलास नहीं करना चाह रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान के इस्तार के ऊपर चाइना मान गया और एक वर्चुअल इजलास हुआ और उसके बाद चीज़ें इनकी, उसके अंदर जो एक फॉर्मेलिटी होती है, अब 10-11 अगर वर्किंग ग्रुप्स हों और 3-4 घंटे का इजलास हो, शायद इजलास 3-4 घंटे भी उस वक्त नहीं चला था, जो मुझे याद पड़ता है, 1 साल पुरानी बात है। तो ये इजलास खत्म हो गया और उसके बाद फिर हम पूछते रहते थे मिनट्स कब साइन हो रहे हैं, मिनट्स कब साइन हो रहे हैं, तो हमें कहा जाता है कि आज हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, हफ्ते में हो रहे हैं, छोटा सा मसला, बड़ा मसला। अब सारी सूरत हाल सामने आ गई है। इसके जो मिनट्स हैं वो साइन हुए 31 जुलाई 2023 को। इजलास जेसीसी का हुआ था 27 अक्टूबर 2022 को। तो इतने टाइम के बाद जब मिनट साइन हुए तो उसमें फिर वो सारी वजूहात जिसकी वजह से ताखीर थी, वो सारी वजूहात को एड्रेस किया गया तो मिनट साइन हुए। और वजूहात क्या थी कि पाकिस्तान कुछ ऐसी चीज़ें जेसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ले गया जिसके ऊपर ना तो चाइना के साथ कोई डिटेल डिस्कशन हुई थी, ना जो रेलेवेंट उसके ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स थे वहाँ पे कोई उसके ऊपर इत्तेफाक हुआ था। तो डायरेक्ट उसको हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम पे लेके जाने का पाकिस्तानी फैसला गलत था और उसका नतीजा आज ये है कि जब मैंने खबर की 3 दिन पहले तो एक बड़ा एक नेगेटिव उसका रिएक्शन आया अक्रॉस द बोर्ड कि जी, कुछ लोग तो कह रहे थे देखें जी सीपेक हम तो शुरू से कह रहे थे नहीं चल रहा था, कुछ कह रहे थे देखा अब चाइना जो है वो दूसरी साइड पे चला गया इसलिए कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ चला पड़ा है। तो जितने मुंह उतनी बातें, चाइनीज के भी इसके डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन होगा इसके ऊपर, हुकूमत पाकिस्तान का भी। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट जो दिया है वो एहसन इकबाल जो फॉर्मर प्लानिंग मिनिस्टर थे जिनकी डोमेन में ये सारा हुआ, उन्होंने कहा कि लगता है तुम आजकल यूएस एम्बेसी ज्यादा जा रहे हो। मतलब इस किस्म की बातें करने का मकसद है कि अगर अब बजाय कि अपना हाउस इन ऑर्डर लेके आए आप अगले के ऊपर अटैक करो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और वैसे भी सीपैक की बात करें $multi-billion जो है ये मंसूबा है और
अगर लोगों का ये ख्याल है कि ओवरनाइट जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इतने अगर ड्यू डिलिजेंस नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। और इसमें आई थिंक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ज़्यादा ये लैक ऑफ प्रेपरेशन है। और मुझे लगता है कि PMLN और PDM की गवर्नमेंट जस्ट बिफोर द इलेक्शन दे वांटेड टू शो कि देखिए जी हम कैसे मुल्क को आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि चाइना का काम करने का ये तरीका नहीं है। अगर वो अरबों डॉलर की आपके यहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं तो बगैर किसी ड्यू डिलिजेंस के, बगैर किसी प्रेपरेटरी वर्क के वो तो ऐसा काम नहीं करेंगे। अब बिगेस्ट टेक अवे क्या है, क्योंकि आपकी खबर में चलें नेगेटिव से शुरू कर लेते हैं कि उसमें चाइना ने पाकिस्तान के कम अज़ कम कुछ जो तजावीज़ हैं उनसे इत्तफाक नहीं किया। मसलन वो फर्दर एक्सपैंड नहीं करना चाहते अंडर सी पैक जो कोऑपरेशन है, जो एरियाज एनर्जी है, वाटर मैनेजमेंट है, क्लाइमेट चेंज है। इसको एक एक करके ले लेते हैं। पहले तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नाज़रीन वो ये है कि जब ये सीपैक शुरू हुआ था जून 2013 में, इसके ऊपर पहली स्टेटमेंट आई थी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की कि मैं काशगर से लेके हम खुंजराब तक एक कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। फिर उसकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आई। 14 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आना था, नहीं आ सके PTI के धरने की वजह से। 2015 में इसके ऊपर फॉर्मली काम शुरू हुआ। इसकी 2-3 फेजेस थी। पहली फेज जो थी 2015 से लेकर 2018-19 तक कंप्लीट होनी थी, दूसरी 2018-19 ऑनवर्ड्स 2022-23 तक। उसके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बन गया था 2017 से 2030 तक के पीरियड के लिए। लेकिन इस सारे अरसा में जो चाइनीज एडवाइस पाकिस्तान को रही कि आप सीपैक के ऊपर काम के ऊपर तवज्जो दीजिए, इसको पोलिटिसाइज ना कीजिए, इसको आप पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक मसाइल हैं उसका हल के तौर पर हतमी इस तरह कोई बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज के तौर पर मत पेश करें। लेकिन पाकिस्तान ने काम के ऊपर कम तवज्जो दी, इसका पॉलिटिकल बेनिफिट उन्होंने ज्यादा लेने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने इसको ऐसे प्रेजेंट किया दुनिया में कि अब सीपैक आ गया तो पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने जा रहा है। और चाइनीज एडवाइस यही थी कि इसको आप इतनी इसका प्रोफाइल बिल्ड मत करें, आप काम पे तवज्जो दें। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारा फोकस नहीं था। पहली फेज जो 2018 तक मुकम्मल होनी थी वो नहीं हो सकी, उसके कुछ मंसूबे आज भी लटके हुए हैं। सेकंड फेज तो बहुत दूर की बात है। इस सारे बैकग्राउंड में जब बगैर किसी तैयारी के पाकिस्तान ये सारी चीजें लेके चला गया JCC के फोरम के ऊपर, तो इवेंचुअली वही होना था जो हुआ। तकरीबन 14 से 15 बड़े मंसूबे, प्रोजेक्ट्स, फिजिबिलिटी स्टडीज जो पाकिस्तान ने प्रपोज की, चाइना ने उसके ऊपर इतफाक नहीं किया। इसमें जो एरियाज थे इनके लिए जो टॉप के ऊपर थे, पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म में कॉपरेशन चाह रहा था जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स करना चाह रहा है। इसके साथ ही कोस्टल टूरिज्म, कोस्टल ब्लू इकोनॉमी की आपने बहुत बात सुनी होगी पिछले सेटअप के दौरान। PTI के दौर के ऊपर भी PDM की जो हुकूमत थी उस वक्त भी, लेकिन उसके ऊपर भी चीन ने इतफाक नहीं किया। तीसरी चीज क्लाइमेट चेंज की थी, उसके ऊपर भी चीन ने इतफाक नहीं किया। पाकिस्तान का एक प्रपोजल ये था एक नया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना दिया जाए जो क्लाइमेट चेंज और ये जो बाकी जो वाटर सेक्टर मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड उन चीजों को देखे। चीन ने इस पे भी इतफाक नहीं किया। इसके साथ ही इनकी ये ख्वाहिश थी कि एक जो है वहां पे हब से लेके गवादर तक एक ट्रांसमिशन लाइन बना दी जाए ताकि जो गवादर सिटी इटसेल्फ है जिसको बिजली अब ईरान से लेके हम सप्लाई करते हैं, तो हम हब से गवादर तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाएं, उससे नेशनल ग्रिड से गवादर को लिंक कर दिया जाए। याद रहे आज तक गवादर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, तो चीन ने इस पर भी इतफाक नहीं किया। उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है कि कामरान चीन ये चाह रहा है कि गवादर के अंदर एक पावर प्लांट जो है वो लगाया जाए, और ये पावर प्लांट हमने एग्री किया हुआ है 300 मेगावाट। 2016 का आई थिंक ये मंसूबा है, ये 2016 का मंसूबा है और ये मुकम्मल हो जाना चाहिए। तो 2018-19 में अभी तक चल रहा है। लेटली इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की पोजीशन ये थी कि हमारे पास एक तो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, इसलिए हम हब में अगर ट्रांसमिशन लाइन लगा के वहां से इसको बिजली दे देंगे गवादर को तो हमारा मसला हल हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि जो थर कोल है वो अब एडवांस स्टेज पे चला गया, वहां से जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, तो थर कोल को यूज किया जाए, क्योंकि ये जो गवादर वाला प्रोजेक्ट था लाइक अदर 3 कोल फायर्ड पावर जो प्लांट्स हैं सीपैक के जो इंपोर्टेड कोल के ऊपर चल रहे हैं, तो उनका हम लोकल पे ले जाएं। चीनी नहीं माने। पाकिस्तान के ये ख्याल था कि इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं और हमारे पास वैसे ही गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर नहीं है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस प्रोजेक्ट को या शेल्फ कर दिया जाए बिल्कुल, या फिर इसको वहां से इसको रीलिक्विड करके थर के साइट पे ले जाया जाए। चीन ने उसके ऊपर भी इतफाक नहीं किया, और जो मिनट साइन हुए उसमें इवेंचुअली पाकिस्तान कंसीडेड के जो गवादर का पावर प्लांट है एज पर द एग्जिस्टिंग प्लान उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। उसमें मैं ये एक चीज ऐड कर दूं कि जो मैं कहीं पढ़ रहा था जो चीनी ऑफिशियल्स हैं उनका मौकफ, आपको ये पता है ना कि दुनिया में ज़ाहिर है कि अब जो
एमिशंस हैं उनको कम करने के लिए चीन के ऊपर भी दबाव है। और अगर आपको याद हो तो जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने भी अनाउंस किया था 2020 में एक क्लाइमेट समिट में कि पाकिस्तान फर्दर जो है वो कोयले पे चलने वाले कोई भी जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर वो रिलाई नहीं करेगा। और 2021 में चीन के सदर ने भी यूएन में ये वादा किया था कि फर्दर नाउ ऑनवर्ड्स कोई भी जो कोल पावर्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं चीन की कंपनियां जो उसमें सरमायाकारी नहीं करेंगी। अब जो चीन का ये मौकफ है कि जो पाकिस्तान चाह रहा था कि ये जो गवादर वाला मंसूबा है उसको शिफ्ट कर दिया जाए थर में, तो उनका ये मानना था कि ये उनकी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है, क्योंकि फिर ये एक नया मंसूबा उसको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अब चीन की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि कोई 2021 के बाद कोई भी जो नया मंसूबा है जिसमें कोयले से वो बिजली घर चले उसमें वो सरमायाकारी नहीं करेंगे। तो वो एक ये रीज़न भी बताते हैं क्योंकि 2016 वाला ये थर वाला जो गवादर वाला मंसूबा है पेंडिंग है, तो इसलिए वो उसमें कैटेगरी में नहीं आता। तो ये भी एक उनका कंसर्न है। डू यू थिंक ये वैलिड उनकी रीजन? ये बिल्कुल वैलिड रीजन होगी, क्योंकि चाइनीज जो है वो बड़ा मैथमेटिकली काम करते हैं। अनलाइक अस कि हमारा कोई प्लान नहीं होता, हमें कोई चीज़ का हम कर लेते हैं, उन्होंने अगर कोई कमिटमेंट की है तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम तब आता है जब हमारी साइड से या कोई भी दूसरी कंट्री जिनके साथ वो डील कर रहे हैं उस साइड से कमिटमेंट्स पूरी ना हो रही हो, तो इस वजह से आप ये बात मान सकते हैं। और फिर इसके साथ कामरान अगर क्विकली हम इसकी वो लिस्ट रन कर लें जो कि हम पाकिस्तान की ख्वाहिश थी और चीन ने नहीं माना, उसमें एक अर्बन डेवलपमेंट को भी शामिल करने की ख्वाहिश थी पाकिस्तान की। अर्बन डेवलपमेंट को आप ले जाएं सीपैक के फ्रेमवर्क में। अब अर्बन डेवलपमेंट एक स्ट्रेटेजिक चीज़ नहीं है, आप कैसे उसको एक चीज़ को इसके अंदर प्रपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कुछ फिजिबिलिटी स्टडीज भी और फ्यूचर डेवलपमेंट के पर्पसेस के लिए उन्होंने की थी प्रपोज, चीन ने नहीं माना। उसमें इन्होंने कहा था कि जो थर कोल है उसके लिए, उसके एक्सप्लोरेशन के लिए, उसके बेहतर यूज़ के लिए वहाँ पे थर कोल पार्क्स बनाए जाएं। चीन ने उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं किया। फिर उनके जी थर कोल को आप दूसरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करें, उसकी कन्वर्जन के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करें, चीन ने इत्तेफाक नहीं किया। फिर उन्होंने कहा जी कि थर कोल को आप जो है इस्तेमाल करें, उसके लिए फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, चीन ने इत्तेफाक नहीं किया। फिर एक अहम इनका प्रपोजल ये था कि जो एग्जिस्टिंग 3 चाइनीज पावर प्लांट्स लगे हुए हैं इंपोर्टेड कोल के ऊपर, उसको लोकल कोल के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाए, चीन ने उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं किया। उसके साथ ही इन 2 मंसूबे ये चाह रहे थे कि 180 मेगावाट के उसमें शुरू हो जाएं गिलगित बल्तिस्तान में या एजेके में, वो उसके ऊपर चीन का इत्तेफाक नहीं था। फिर इंपॉर्टेंटली इन्होंने साउथ और नॉर्थ एक गैस पाइपलाइन बिछानी है, वो पता नहीं कितने, शायद एक दहाई होगी उससे भी ज़्यादा, उस प्रोजेक्ट को इन्होंने प्रपोज किया कि ये सीपैक फ्रेमवर्क में आ जाए, चीन ने इत्तेफाक नहीं किया। फिर इनका ये ख्याल था कि स्ट्रेटेजिक अंडरग्राउंड गैस स्टोरेजेस के कुछ जो है वो मंसूबा शुरू किया जाए, चीन ने इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं किया। 2-3 और चीजें मैं उसको एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं क्योंकि एक और जो अहम इशू लेटली इमर्ज हुआ सीपैक की अगर बात करें वो था सिक्योरिटी का मामला, और इस हवाले से भी ये जो मिनट साइन हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट इसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और खास करके जो उसका सेकंड फेज है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, और जो जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी हाईएस्ट फोरम है सीपैक का पाकिस्तान और चीन के दरमियान, उसकी जो मीटिंग हुई थी पिछले साल अक्टूबर में, उसके मिनट साइन हुए जुलाई में, उसमें क्या फैसले किए गए उस पर बात कर रहे हैं। तो आप बात कर रहे थे और भी बहुत सी ऐसी चीजें हुई, और इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेन जो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट था मेन लाइन रेलवे, उसके हवाले से भी कोई जिक्र है इसमें या मेन लाइन रेलवे को हम डिस्कस करेंगे कल के प्रोग्राम में, ठीक है। वो एक उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी उसके अंदर भी है, उसको टच नहीं करते। लेकिन 2-3 चीजें जो अभी हैं उसके अंदर 3 पावर प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुए, उसकी जो फाइनेंसिंग है अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि मिनट्स के अंदर कुछ चीज़ आ जाए। वो चीन ने डायरेक्टली उस तरह नहीं लिखी। उसमें एक आज़ाद पटन पावर प्लांट था, एक कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट है, एक थरकोल का ब्लॉक 3 का है, ये अच्छे खासे बड़े पावर प्लांट्स हैं। तो इसके ऊपर भी चीन के कुछ, पाकिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसको फाइनली मिनट से निकाल दिया गया। जो मेटालिक मेटालिक आपके मिनरल्स हैं उसके हवाले से पाकिस्तान चाह रहा था कि कुछ एक आध प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, चाइना ने उसके ऊपर भी इत्तेफाक नहीं किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कामरान जितनी चीज़ें यहाँ से निकाल दी गई हैं वो कभी हो नहीं सकती। अगर पाकिस्तान बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर ले, इन तमाम चीज़ों के ऊपर चाइनीज़ जो कंसर्न्स हैं और आपकी जो वायबिलिटी है इकोनॉमिक, उसको अब प्रूव कर दें टू चाइनीज़ इन द कंसर्न जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, तो हो सकता है चीज़ कल जेसीसी में, जब भी जेसीसी हो उसमें चली जाए। ये हम अगर नहीं करेंगे तो फिर इसके ऊपर जो प्रोग्रेस है इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। और सबसे बड़ी बात, 2 इस वक्त जो चाइना के सबसे बड़े कंसर्न्स हैं,
नाज़रीन, इसको आप जो भी कहें, अमेरिकन साजिश कह लें, इंडिया साजिश कह लें, पाकिस्तानी मीडिया की नेगेटिविटी कह लें, कुछ भी आप ब्लेम कर लें, जो चीज़ पाकिस्तान ने साइन की हुई इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दो चाइनीज कंसर्न है। नंबर वन, उनका जो कंसर्न है इस वक्त के जो पाकिस्तान ने 2015 के एनर्जी एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उसके तहत जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जो चाइनीज पावर प्लांट्स पाकिस्तान लगे हुए हैं, उनकी अदायगियां होनी थी, एक रिवॉल्विंग फंड बनना था, उस तरीके से वो अदायगियां नहीं हो रही। चाइना का ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि आप अपनी जो एग्रीमेंट्स हैं उनको इंप्लीमेंट नहीं करते। दूसरा जो चाइनीज कंसर्न है वो इमर्ज रिसेंट ईयर्स में हुआ है, चाइनीज सिटीजन्स, चाइनीज जो है प्रोजेक्ट्स और चाइनीज इंस्टीट्यूशंस की सिक्योरिटी पाकिस्तान में। अब ये इतना बड़ा एक मसला ये बन चुका है कि चाइना जब तक 100% सेटिस्फाइड नहीं होगा कि उसकी इमलाक और उसके शहरी पाकिस्तान में महफूज हैं, वो फर्दर कोई सीपेक में एक्सपेंशन की बात नहीं करेगा। कामरान, ये थोड़ा सा चूंकि सब्जेक्ट आपसे भी रिलेटेड है, इन्हीं मिनट्स के अंदर ये चीज जिक्र इस चीज का है कि जो ड्राफ्ट मिनट्स थे उसमें जो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट थे वो इस तरीके से पाकिस्तान ने कवर नहीं किए हुए थे, जो पाकिस्तानी साइड्स के ड्राफ्ट मिनट्स थे। लेकिन जो फाइनल मिनट्स साइन हुए हैं उसके अंदर जो मैंने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ पढ़ा है, अब 10 साल हो गए हैं सीपेक और हमने उसका एक दहाई की वो सेलिब्रेशन भी मना ली हैं। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कुछ हमने कोशिश की कि चाइनीज़ को कन्विंस करें, वो पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट की विजिट की, हमने हमारी ख्वाहिश थी, वो नहीं हुआ। वाइस प्राइम मिनिस्टर आए, फिर उसी वक्त ये मिनट साइन हुए थे। जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कामरान, वो है चैलेंज्ड सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उस पर पाकिस्तान और चाइना का अब इत्तेफाक है। जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो, मतलब इट्स सच अ क्रिटिकल सिचुएशन, और उसको फिर फर्दर बीफ अप करने के लिए बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें उसके ऊपर इनका एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपके जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करेंगे। उसमें एक एनहेंस्ड वर्क प्लान है जो अब पाकिस्तान इंप्लीमेंट करेगा, पहले भी करने जा रहा था। इसके अलावा जो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स होंगी वो यूज होंगी चाइनीज जो नेशनल्स हैं उनकी मूवमेंट के लिए, और पाकिस्तान इस चीज को फैसिलिटेट करेगा और इजाजत देगा कि चाइनीज अगर इंपोर्टेड बुलेट प्रूफ व्हीकल्स करना चाह रहे हैं इंपोर्ट तो वो कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, बट कुछ पाकिस्तान के भी जेन्युइन कंसर्न्स हैं। लेकिन उन कंसर्न से पहले आई थिंक ये जो अगर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लेटली दो इश्यूज तो आपने, एक आईपीपीज वाला इशू और दूसरा सिक्योरिटी वाला, लेटली ये मेजर एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गए हैं, और आई थिंक चाइनीज के कंसर्न्स वैलिड भी हैं। आप बड़े वाकयात गुज़श्ता चंद सालों में देखें, थासू का वाकया हुआ, कराची चाइनीज जो कॉन्सुलेट है उस पर हमला हुआ, फिर जो इसी तरह से जो उनका लैंग्वेज कराची यूनिवर्सिटी में जो उनके प्रोफेसर्स को मारा गया, गवादर के अंदर इसी तरह के बहुत से वाकयात हुए। तो दिस इज अ सीरियस कंसर्न, और आई थिंक इट इज़ गुड कि दोनों साइड्स एक्नॉलेज कर रही हैं कि ये एक डेंजर है, और सबको पता है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, हॉस्टाइल फोर्सेस हैं, वो डेफिनेटली दे डोंट वांट कि ये इस तरह से सक्सेसफुल हो, और ये पाकिस्तान और चाइना की नाकामी होगी कि अगर हम उस थ्रेट को एक तो एंटिसिपेट नहीं करते और फिर उनको प्रीएम्प्ट नहीं करते। तो ये पाकिस्तान की ख्वाहिश और कोशिश भी रही है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने इसको सीपेक और सीपेक की सिक्योरिटी को कभी लाइट लिया है, लेकिन हम उस तरीके से या जो चाइनीज प्रोटोकॉल्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। हमने 2 स्पेशल सिक्योरिटी डिविजन्स हमने नई बनाई आर्मी ने साउथ और नॉर्थ के प्रोजेक्ट्स के लिए। मेरा ख्याल उसकी जो टोटल उसकी जो कॉस्ट है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अराउंड 100 अरब रुपया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हर साल की हम 20 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ओवर एंड अबव रेगुलर बजट हम इनकी सिक्योरिटी की जो प्रोटेक्शन है उससे रिलेटेड जो अखराजात हैं, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी है या नॉर्थ और साउथ जो सिक्योरिटी डिविजन्स हैं उनके लिए हम हर साल 20 अरब रुपया दे रहे हैं। उसमें उनके उसकी एक्सपेंशन भी है फर्दर इन डिविजन्स की, और उनके जो अखराजात भी हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो कंसर्न जिनका मैं जिक्र कर रहा था वो ये थे कि चाइनीज जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो एक स्कैटर्ड प्लेसेस पे रह रहे हैं। पाकिस्तानियों का ये ख्याल है कि अगर ये एक ऐसी जगह पे रहे जहां पे इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना हो बेहतर वो, और दूसरा लेबर जो है चाइनीज जो पाकिस्तान में आ रही है वो वायलेशन करते हुए पाए गए जो पाकिस्तानी लेबर लॉज हैं। तो उनके जब इस तरह की वायलेशंस करेंगे तो फिर लोकल जो कम्युनिटी है वहां से आपको सिक्योरिटी कंसर्न, कोई लड़ाई झगड़े इस किस्म की चीज हो सकती है, तो उस पर भी काबू पाने की जरूरत है। तो चाइनीज ने इंश्योर किया है कि वो इसके ऊपर पाकिस्तान के जो कंसर्न है वो एड्रेस करेंगे। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड इसके ऊपर हम मेरा ख्याल कल के प्रोग्राम में फर्दर बात कर लेते हैं। एक और जो चीज अब है आगे हम ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे, वो कामरान जो वर्ल्ड बैंक की अब उन्होंने एक सीरीज ऑफ पॉलिसी नोट्स जारी किए हैं, और ये नोट्स हैं अगली गवर्नमेंट के लिए, और टाइटल है इनका कि रिफॉर्म्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अब इंटरेस्टिंग है कि ब्राइटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान की फिक्र हमें होनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल लैंडर्स हमें एडवाइस कर रहे हैं और बहुत अरसे से एडवाइस कर रहे हैं।
तो और इस तरह के मेरे ख्याल में ड्राफ्ट पेपर्स जो हैं, आई विश कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से आती और वो इलेक्शन से पहले बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने के वे फॉरवर्ड भी बताते। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ब्रेक लेते हैं लेकिन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दे। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे तोबियस हक, ये लीड इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक के, और जो पॉलिसी साइड है वर्ल्ड बैंक की, जिसमें गवर्नेंस के इश्यूज हैं, प्राइवेट सेक्टर है और इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उसके ऊपर ये वर्ल्ड बैंक को एडवाइस करते हैं और पाकिस्तान के पॉलिसी नोट वो लिखते हैं। मेरा ख्याल उन्हीं से पूछेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें या बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इतना शायद पाकिस्तान की जो मईशत है दर्द नहीं है, तो आखिर ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में पाकिस्तान में तनकीद भी की जाती है कि शायद ये जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के, तो उनको इतना क्यों कंसर्न है रिगार्डिंग पाकिस्तान इकोनॉमी। ब्रेक के बाद इस पर बात जी। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे ब्रेक से पहले शहबाज ने आपको बताया था कि हाल ही में हमने देखा है कि वर्ल्ड बैंक ने सीरीज ऑफ जो रिपोर्ट्स हैं वो जारी की हैं और बुनियादी तौर पर जो अगली गवर्नमेंट आनी है उनको तजावीज़ दी हैं कि कैसे पाकिस्तान जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है उससे उसको निकाला जाए। और उसमें कुछ अलार्मिंग फिगर्स भी हैं, जैसे पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि गुर्बत में पाकिस्तान में किस तरीके से इजाफा हुआ है। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तोबियस हक, ये वर्ल्ड बैंक के लीड सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे तमाम ये सवाल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द स्टूडियोज टुडे। Recently, the World Bank has released a report regarding Pakistan's economy, and it has made certain interesting observations. One, of course, that I'll begin with, World Bank has described the current economic situation as deeply concerning. Can you elaborate? Sure. I mean, the situation at the moment is we've had negative growth last year. We're looking at low growth next year. We have a population growth rate of 2.5%, while the economy is only expected to grow by about 1.5%. So that means, on average, incomes are falling. And what we've seen over the past year, based on our best estimates, is that the poverty rate has increased by 5 percentage points. So we're now at about 40% of poverty. And that means that about 12 million Pakistanis actually fell into poverty in the last year. We know the economy is still reliant on the IMF SBA program, and external reserves remain at very low levels, about 1.6 months, and are on a downward trajectory. So whatever is happening in the economy at the moment is clearly not serving the majority of Pakistanis well. So Tobias, you have mentioned a very alarming figure, and that is 2.5% population growth rate, and your projection for the economic growth rate for this fiscal year is 1.9%. So that means there will be higher poverty, higher unemployment in this fiscal year as well. So here comes your critical policy notes. So you have recommended that Pakistan needs to make a policy shift. What kind of shift you are talking about, and why at this point in time? That's an excellent question. I mean, what we are saying essentially is that this is not the time for tinkering. This is not the time for minor change. This is the time for fundamental policy shifts. And what we've talked about at the conference over the weekend, and what we're talking about in these policy notes, is shifts in 5 fundamental areas. So the first is to do something about human development outcomes. We have 40% of Pakistani children stunted. We have 80% of 10-year-olds unable to read, even if they're in the schooling system. We have 7% of children dying before their 5th birthday. These kind of human development outcomes really fundamentally undermine the productive potential of the economy. So it's a human crisis, but it's also an economic crisis. So we need to do something about that. That's the first. The second, we have these unsustainable fiscal deficits. We are spending on consumption. We are taxing a very narrow tax base, and that is undermining the productive potential of the economy as well. We have a private sector that is very narrow. It's focused on the domestic market rather than focused on exports, rather than focused on dynamic growth. And we have issues in the energy sector where we have very high energy prices, where we have very inefficient generation of energy, very inefficient distribution of energy, and we have fundamental issues in the agricultural sector as well, where essentially you've had a very
hands-on approach by government over many years. You've had subsidies, price controls. That's been aimed at ensuring food security, but what it's actually done is locked production into certain crops using certain methods, and it's prevented the private sector. So World Bank says that the subsidies to the agriculture sector basically promote inefficiencies, and that means low production, low yield. And you are saying that these subsidies should be withdrawn. Now, there is a position in the WTO where the developing countries are on one side, they say, no, we need these subsidies for our population, and the developed world is on the other side. How to strike a balance where these agriculture subsidies somehow matter to the people, although there are not direct subsidies, but indirect subsidies. Do you think a country like Pakistan, where people don't have much resources, where they may not be able to afford an electricity price for their agriculture fuels, which are a normal rate, so don't you think at some point in time some subsidies are still needed? So, look, of course, the poor need support. There's no doubt about that. Our argument as the World Bank is that the poor can best be supported through social protection schemes like the Benazir Income Support Program that actively puts money in poor people's pockets. What we have at the moment is very large levels of government spending that are only available to specific production techniques, and those production techniques may not be efficient, they may not be competitive, they may be very environmentally harmful, and the benefits of those subsidies are not necessarily accruing to the poor. They're accruing to the landowners, they're accruing to the larger farmers just as much. And so the fundamental challenge is to, of course, support the poor, but make sure that the spending that is being used to support the poor targets the poor, it reaches the poor, and it doesn't push the economy into production that is very inefficient, that is very environmentally and socially damaging. You have listed a number of problems and reasons why that Pakistan's economy is going down, and one of the reasons the World Bank has listed is the weak institutions in Pakistan. And interestingly, the World Bank has proposed that Pakistan should set up National Council of Ministers. Why is it so? Do you think that we have experimented a lot? There are even the current caretaker government, they have formed a special committee to revive the country's economy. Do you think that this idea of setting up a council of National Council of Ministers will help address Pakistan's economic woes? Look, I mean, I think the key fundamental issue we're getting at is that there are problems with federal-provincial coordination. And I think everybody recognizes that. We have a system in which the provinces get 90% of their revenues from the federal government, so that really weakens their incentives to raise revenues. We have a system where the federal government continues to deliver many of the services that should be now provincial mandates under the 18th Constitutional Amendment, and they're spending enormous amounts of money delivering what should be provincial responsibilities. And what we see is that there's a lack of coordination between the provincial governments and the federal governments, both when it comes to service delivery and when it comes to the development and implementation of policy. So you have the right arm doing something completely different to the left arm, and it's very unclear who is accountable for what and who is responsible for what. Now, is the solution another council of ministers? Maybe, maybe not. I think this was a suggestion we wanted to put on the table because we think something needs to be done to improve coordination. If that can be done with existing institutional arrangements, if that can be done through, for example, the Council of Common Interest or the National Economic Council, then all the better. Let's avoid new bureaucracy. Tobias, on the World Bank's advice, Pakistan had set up the National Tax Council. And the purpose was the integration of all the taxes, at least integration of their policies, and having at least one return, sales tax return. Do you think that setting up the NTC, National Tax Council, helped in this manner? Because that could be used as an example, good or bad, for setting up the Council of Ministers. Yeah, look, so we have continued to work with the NTC, and I think one of the real examples where we've seen progress has been on the GST harmonization. We've still got a way to go, but what you've seen now is the provinces and the federal government agreeing on some of the definitions of what's a service and what's a tax, and at which point in the supply chain it should be taxed. That sounds all very technical, but what it means in practice is that we can now move towards a computerized system where taxpayers can submit one return and they can comply with the tax arrangement without spending hours and hours or submitting multiple returns.
That's a really good thing because it reduces the compliance costs for taxpayers and it means it's easier for taxpayers to meet their obligations. Okay, we have to go for a break here and our discussion will continue. यहाँ पे break लेंगे और break के बाद हमारी discussion जो है वो जारी रहेगी. ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. हमारे साथ वर्ल्ड बैंक के लीड सीनियर इकोनॉमिस्ट जो पाकिस्तान में वो मौजूद हैं और उनसे पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उस पर बात कर रहे हैं और वे फॉरवर्ड क्या है. नाउ वी विल टॉक अबाउट the energy sector. You know that the World Bank has been giving policy loans to Pakistan to reform the energy sector. Yet we have 2.3 trillion rupees in power sector circular debt, another 2.1 trillion in gas sector. Don't you think that World Bank's policy of extending policy loans really backfired, and the idea behind just to increase the tariff to recover these circular debt is really not working? It's a very complicated sector and there are many issues. I think the World Bank's position has always been that ultimately we cannot solve this problem. This is a problem for Pakistan to solve. I think this question about what the electricity tariffs should be, again, we are not determining that. But the World Bank view is absolutely that you should not be taxing the man in the street to pay for my electricity consumption. Ultimately, somebody has to pay for electricity. And that's either going to be the government through taxes or it's going to be the user through their tariffs. And we think it's much fairer and much more efficient if the person using the electricity pays for it. Now, I think electricity tariffs are so high at the moment that it is imposing enormous costs on all members of society. And that is why continually increasing electricity tariffs is not enough. Much more reform is needed, and that's what we're saying in these discussion notes. It's what we've been saying at this conference. We need to address the fundamental problem, which is electricity costs. The cost of providing electricity is very high in Pakistan. Part of that is because the generation mix really relies on outdated fossil fuel technology, which is inefficient. It's not the cheapest possible way of producing electricity. And a huge part of it is the inefficiency of the distribution companies, which have enormous inefficiencies. They have distribution losses, they have financial losses, and that basically, that inefficiency is pushed onto the consumers in higher electricity prices. The problem is that the prioritization or sequencing of the reforms, what the World Bank and the IMF both, they have been pushing for the electricity tariff increase. Without increasing the tariffs, we have seen in the past there was no loan from either the World Bank or from the IMF. Don't you think it was the wrong policy by the international financial institutions to place the reforms in a manner where people were burdened, rather overburdened? Now they are paying the price which is more than the cost of generation. Do you think the World Bank was also at fault because of this policy? So I think before the reforms that were implemented with World Bank support, and these were government reforms, not World Bank reforms. Before these reforms, 30% of the cost of energy subsidies went to the top 20% of Pakistanis. Those are the richest 20% of Pakistanis. After these reforms, it's about half that goes to the lowest 20%. So about half now going to the lowest 20%, half going to the protected consumers. So what we have is a system that is much more equitable than it used to be, that the benefits of these subsidies are flowing much more to those who need them and much less to those who are relatively able to bear those costs. Now, I am not underplaying the severity of the living cost crisis that is facing many Pakistanis, and much more needs to be done. But we need to address these structural issues around the costs of generation and the costs of distribution, rather than focus only on the electricity we have very crisis. little time left. Taxation. You have been funding the tax reforms, and we believe that the administration mayors don't need any kind of foreign money for bringing reforms. If you want to increase the tax to GDP ratio, if you want to tax the agriculture sector, it doesn't need any World Bank money. It needs the commitment. So do you think it was the right decision to fund these projects, the programs like TAP, like this, the PRR? So do you think
or in future you have already funded these projects, do you think in future the World Bank would still fund such projects, or it's time to say, okay, you don't need foreign money, you need the commitment to change these areas? Look, ultimately reform comes from governments. It comes from people. The World Bank cannot make reform happen. The purpose of projects like PRR, it's like a bicycle. We can replace the tires, we can make sure that the chain works smoothly, but we can't ride it. And ultimately what we need is reform commitment. We need a government coming in and doing the difficult reforms that are going to use that system that we have built up. They use that system to drastically increase revenue performance. And that requires some difficult decisions to be made. It requires us to move away from a system where we're highly reliant on the GST, where there are big exemptions, towards a system where everybody pays their fair share, and we're raising much more revenue from sources that are not exploited at the moment nearly enough, such as agricultural taxation and property taxation. So, last question, any surprise coming in your October 3rd report? So look, we're not saying anything new, and I don't think a man as well informed as you, Shahbaz, will be surprised at all. I think what we are saying is we want to have a conversation about this. We want to bring in more people, and we want to engage. And the more people we can get talking about these issues, the better. That doesn't need us to give any. If you allow me one last question, do you think Pakistan is also currently working on a new plan to revive Pakistan's economy, like the Special Investment Facilitation Council? It appears that Pakistan wanted to get rid of IMF or this balance of payment crisis by attracting billions of dollars foreign investment. Do you think this plan can work without addressing the fundamental economic problems that we are facing? I think the answer to that is very clear. Any solution that is just about bringing in more foreign exchange reserves, any solution that is just about simple transactions is not going to be a sustainable solution. The real problem is that Pakistan exports 10% of GDP and it imports 20% of GDP. Until you improve the productivity of the economy, until you start doing some of these real deep structural reforms that we're talking about, it's going to be very hard to achieve genuine, sustainable economic growth. Thank you so much, Mr. Haq, for joining us. And जो उन्होंने पाकिस्तान की जो मईशत है उसके हवाले से और जो वे फॉरवर्ड है वो भी हमें बताया। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।